and a very good morning to all of you, and welcome to BYJU'S exam prep, the most comprehensive preparation for our exam. So today is 26th June, and as we all know, from Monday to Thursday 11 a.m. in the morning we come up with the Hindu analysis. आज 26 June यानी Monday है, and we are here with the Hindu analysis of 26 June. So if I'm audible and visible, just write in the comments, yes sir, you're audible, so that we can start our session. Okay, so these are the two important articles on the first page. The first article says, after meeting Mr. Amit Shah, Mr. Biren Singh says will reach out to cookies. So this is actually related with Manipur and all. I hope you are aware that there's some sort of riots had happened in the past and also that is what actually this article is. The next one is Wagner Group se related hai. Wagner Group back to base under deal with Putin. So this also we will be discussing because Wagner Group has also been in the news. Okay, so let's start. Yes, good morning guys. I am fine. Aap log kaise ho? So let's start with this one. I hope you are aware. That actually this is, I mean, the state of Manipur. I mean, the violence have happened in the past and all. I mean, so there are two very famous communities or tribal communities. One is Cookies and another is Meiteis. So there have been conflict between the two and all. So Mr. Biren Singh, he is actually the Chief Minister of Manipur. He actually came to Delhi and met the Home Minister of India, that is Mr. Amit Shah. You can see it. And here you can see on Sunday said Kuki community was among his own and promised that a fresh round of dialogues will be initiated with all stakeholders in the violence hit state. So Mr. N. Biren Singh said, actually there are two communities, okay, Cookies and Meiteis, in you can say Manipur. So Meiteis are mostly from Hindu community and they are mostly from Christian, okay. So there have been conflict and all. So the Chief Minister has said that Kuki community also belongs to, was among his own, belongs to the Manipur and all. That is what he said. He was in Delhi to meet Mr. Amit Shah, the Home Minister of India, and discussed about the situation in Manipur. Okay. So he was saying about evolving situation on ground in Manipur. The meeting comes a day after Amit Shah chaired an all-party meeting on the issue. So before that, the Home Minister of India called an all-party meeting. All-party meeting means all the prominent parties were invited to ask for suggestions. ठीक है? कभी कोई बड़ी चीज होती है इसमें all party लोग को और भी बाकी सारी पार्टियों को बुलाया जाता है. Means the leaders of other political parties are also invited to ask for suggestions and all. Okay. So 10 MLAs from Kuki community in the Hill district of Manipur, including 7 from BJP, demanded Chief Minister's resignation. Okay, so 10 MLAs. So 10 MLAs of Manipur actually demanded that Chief Minister should resign. That is what is being mentioned here. Okay, so just have an idea about it. And these 10 MLAs are from Kuki community. So, and actually, I mean, out of these 10, 7 are actually from the same political party. So, Mr. N. Biren Singh is actually from BJP. And 7 MLAs of the BJP are itself demanding that Mr. N. Biren Singh should resign. ठीक है, तो उन्हीं के पार्टी के 7 MLAs हैं, 10 में से 7 जो है, out of 10, those 7 MLAs are from BJP. They have requested that N. Biren Singh should resign and all. Okay, you should be knowing it. That is what is being talked about. So the Chief Minister has said that we will reach out to Kuki community and all. So basically it appears that Kuki community is not happy with the Chief Minister. Okay, so that is why he said that he will be reaching out to Kuki community. Reaching out means meeting them and listening their grievances and all. So that is what it was in the news. Yes, all party meeting मतलब opposition, right, Manu Punia? देखो कभी कोई बड़ी चीज होती है ना, whenever anything big happens, so all party meeting is generally called, where actually the oppositions, there are different oppositions, alliance and all the other stakeholders are called. ठीक है, उसमें meeting होती है. So दूसरे से राय ली जाती है कि if there is an opposition party wants to give some opinion, so yes, they can also give, है ना? So different political parties are invited. ठीक है, तो basically यही तो democratic ideas ये होता है. Democracy is all about that, है ना? So democracy में the role of opposition is very important, right?
So even the people who are not in power, they also have a right to say in the functioning of government, right? So that is what it is. So that is what is being talked about. Now इसमें एक और चीज की बात डिस्कशन हो रही है. मीरा पाइबी, देखो यहाँ लिखा हुआ अभी, मीरा पाइबीज have been leading protest. So basically they are women, social movement led by women. Okay, so these are actually इस तरह होता है, torch bearer, they are like that. ठीक है. In the state of Manipur, they are called as guardians of civil society. This is very old. I mean, this means when I mean they have been doing it even in the past. देखो 2017 के हैं उसे. So they are actually the social right movement against atrocities committed by AFSPA. I hope you are aware of AFSPA, Armed Force Special Powers Act. So where actually some special powers are given to armed forces. So there have been demand and protest in the past also by Manipur, citizens of Manipur or people of Manipur that AFSPA should be revoked. तो पहले भी बहुत सारे protest चलते आए हैं कि AFSPA हटाया जाना चाहिए. देखो एक one of them is this. तो ये जो ऊपर में ना टॉर्च बीरर ये लेके चलते हैं. These are मीरा पाइबी, I mean, and the I mean that is what it is. तो इसमें डिस्कशन है मीरा पाइबी का, इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा. Okay, so go and read from your own side. Actually there's a question from you. I mean she's very famous lady. She's an Indian civil rights activist, political activist and poet from the Indian state of Manipur. So from 2000 actually she went into hunger strike from 2000 to 2016 for 16 years for revocation of or for abolition of Armed Force Special Powers Act. AFSPA हटाने के लिए 16 साल तक उन्होंने हंगर स्ट्राइक किया था. शी इज फ्रॉम मणिपुर. यू हैव टू टेल द नेम ऑफ द लेडी. योर ऑप्शंस आर मैरी कॉम, इरम शमीला, लोवलिना बोरगोहेन, मीराबाई चानू. व्हाट इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन? क्या सही जवाब है बताइए. पता होना चाहिए. मैं दिस इज इंपॉर्टेंट. स्टार मार्केट से पूछा जा सकता है, जैसे मीरा पाइबी से पूछा सकता है, फिर ये वाला क्वेश्चन भी आ सकता है. बिकॉज मणिपुर इज इन द न्यूज, सो क्वेश्चंस रिलेटेड विद मणिपुर कैन बी आस्क्ड. यू शुड बी नोइंग इट. ट्राई कीजिए, बताओ क्या व्हाट इज द राइट आंसर. सबको लाइक बटन प्रेस करते जाओ. एवरीवन प्लीज प्रेस द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. यस, the right answer is Iram Sharmila. B is the right answer. Alok Pratap Singh Manya Chawla has answered it. Very good. So Iram Chanu Sharmila, she is called as Iron Lady of Manipur, ya Mango Bee. And she is actually she was on the started hunger strike on 5th November 2000 till 9th August 2016. For almost 16 years she was fasting. तो उनको जो नाक से फिर होता है ना, मतलब she was not eating from the mouth, तो फिर उससे फोर्स फेड वगैरह कुछ किया था या नाक से पानी दिया जाता था, इंजेक्शन वगैरह. प्लीज चेक इट कि कैसे उनको खिलाया जाता था ताकि वो 16 साल जिंदा रह पाए. मीन शी वाज नॉट ईटिंग फ्रॉम हर माउथ. ठीक है, खाना नहीं खाते थे एंड ऑल. सो बिकॉज ऑफ प्रोटेस्ट ऑफ रिवोकेशन ऑफ AFSPA. सो आई होप यू आर अवेयर AFSPA गिव्स सम स्पेशल पावर्स टू द आर्म्ड फोर्सेस वेयर AFSPA इज एनफोर्स्ड एंड ऑल. ठीक है, आपको पता होगा. इस पर आई थिंक CLAT 2022 में क्वेश्चन भी आया था, है ना, and all. So that is why you should be knowing about it. Yes, the right answer is B is the right answer. Yes, many people have answered it. Okay, now Wagner Group is in the news. It is a news related with which country? Your options are Ukraine, Russia, USA, Egypt. What is the right answer to this question? आपको ये बताना है वैगनर ग्रुप न्यूज में ये क्या चीज से रिलेटेड है. अभी 2 दिन पहले न्यूज में था. Yes, very good. Gauri has answered it. Rashmikant, good, very good. Russia is the right answer to this question. B is the right answer. Wagner Group back to base under deal with Putin. देखो एक्चुअली क्या है, देखो वैगनर ग्रुप ने एक तरह से you can understand like that. It's a private militia, private military organization. ठीक है, of Russia. ठीक है, and it was led by Yevgeny Prigozhin. I mean this person. And he was considered as very close to Vladimir Putin, who is actually the president of Russia. बहुत करीबी माने जाते हैं. In fact, he is called as Putin's chef. Chef समझते हो ना, जो मतलब the one who cooks food and all, है ना, तो जो serves food and all. तो ये बहुत famous माने जाते हैं. आप देखो यहाँ this person is actually giving food or serving food to Vladimir Putin. तो ये इनसे इतने करीब आदमी थे. ठीक है. So he was having his own private military organization called as Wagner Group, which was actually supporting Russia in the war, supporting Russia against Ukraine. क्योंकि रशिया ही की थी, है ना. Okay,
सो जब वॉर हो रही थी, व्हेन वॉर वाज हैपनिंग, सो वैगनर ग्रुप वाज आल्सो अटैकिंग यूक्रेन। ठीक है, खास कि यहाँ पे देखो, इफ यू सी इट, दिस इज रशिया, दिस इज यूक्रेन। ओके, यहाँ पे एक जगह है रोस्टोव। ठीक है, दिस इज द प्लेस रोस्टोव, इट्स अ पोर्ट सिटी ऑन द सी ऑफ, ये वाला एज़ोव सी है, मैंने बताया कई बार, दिस इज एज़ोव सी। ओके, अच्छा एक क्वेश्चन, यहाँ पर एक रिवर आती है, आप बताओ उसका रिवर का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस रिवर? which comes like this, यहीं पर है रोस्टोव, and this is Azov Sea. Okay, अब देखो यहाँ पर रोस्टोव है, and this is Moscow, the capital. ये वाला बॉन्डी है, ये वाला पूरा रशिया हो गया। this entire one मैं दिखाता हूँ, ये जो बना रहा हूँ, this is actually रशिया, है ना, ये पूरा रशिया हो गया ना, इधर वाला रेड के अंदर का। ओके, नाउ दिस, ये वाला जो है इसको डॉन रिवर कहते हैं। ठीक है, दिस वन इज डॉन रिवर, वेरी फेमस, मैंने बताया भी था, इट गोज इन द एज़ोव सी। यस, यहाँ पर कर्ज स्ट्रेट है। यस, आई वाज आस्किंग द रिवर, तो डॉन रिवर इसका आंसर है। ठीक है, ओके, नाउ तो यहाँ से दे वर एक्चुअली मूविंग टू मॉस्को, दे वर एक्चुअली ट्राइंग टू कैप्चर दिस एंड ऑल, but later on the talks happen and finally they decided to halt their advance towards Moscow. फिर बाद में उन लोगों ने, है ना, देखो रोस्टोव से मॉस्को की तरफ जाना रोक दिया। सो दे एक्चुअली रिवॉल्ट हैड हैपेंड एक तरह से, मतलब वैगनर ग्रुप व्हिच वाज एक्चुअली अ प्रो रशिया ग्रुप और प्रो रशियन ग्रुप एक्चुअली रिवॉल्टेड अगेंस्ट रशिया और अगेंस्ट पुतिन, बट लेटर ऑन द टॉक्स हैपेंड एंड द थिंग्स गॉट सॉल्व्ड। ठीक है, हाँ, डॉन रिवर है, वेरी गुड। हाँ, तो उसके बाद क्या है कि बाद में बात हो गई और चीजें संभल गई। एंड बेलारूस, सो हियर इज यूक्रेन एंड हियर इज बेलारूस। आई हैव टोल्ड यू दैट बेलारूस इज एक्चुअली अ फ्रेंड ऑफ रशिया ना, सो बेलारूस एक्चुअली टॉक्ड विद दिस वैगनर ग्रुप। ठीक है, ओके, सो दैट इज व्हाट इज बीइंग डिस्कस्ड हियर। तो इस पर बात हो रही है कि वैगनर ग्रुप से बेलारूस ने बात की, देखो यहाँ पे लिखा हो कहीं पे, है ना, the aborted mutiny, है ना, जो बगावत है, जो revolt है, it was aborted or it was, I mean, you can say, हाँ, it was diverted, aborted, जो भी कह लो, है ना, will move to Belarus. So this is the person who is the head of the Wagner group. He will go to the Belarus according to the agreement. ठीक है, तो ये लोग जो हैं, उसके जो हेड हैं, his head, the head of Wagner group will be going to Belarus in this regard. Okay, तो एक बेसिक आइडिया होना चाहिए, because ये बहुत फेमस है कि is actually one of the closest person of Vladimir Putin and all. And that is why recently the revolt has happened led by him. Later on this has been actually solved, तो ये आपको पता होना चाहिए। Okay, yes, now let's move on to another article on the first page. Modi CC Inc. deal on strategic partnership. Now CC is actually Abdel Fattah al-Sisi, he is Egypt president, है ना, Abdel Fattah al-Sisi, both signed a deal. Inc मतलब क्या होता है, साइन करना, यहाँ पर signed a deal, है ना, on a strategic partnership. Okay, so आप देख सकते हो, this is actually PM Modi with the Egyptian Prime Minister. ये president नहीं है, Mustafa Madbouli, he is actually the Prime Minister of Egypt. In Egypt, actually, president is considered as more powerful. ठीक है, so you should be knowing it. Okay, अब देखो, I hope you are aware, recently PM Modi from India visited USA. आपको पता होगा, and he visited Washington DC. एंड न्यूयॉर्क भी कहते हैं पहले, आई थिंक ही वेंट टू न्यूयॉर्क। वहाँ पे यूनाइटेड नेशन की ऑफिस में ही सेलिब्रेटेड इंटरनेशनल योगा डे ऑन 21 जून। ये सब पता होगा आपको, आई मीन रिसेंटली 21 जून वाज देयर इंटरनेशनल योगा डे। देन वेंट टू वॉशिंगटन डीसी, मेट द यूएस प्रेसिडेंट एंड ऑल। ठीक है, एंड देन आफ्टर दैट ही केम बैक टू इजिप्ट। यहाँ इजिप्ट है ये वाला, दिस वन। ठीक है, सो कैन यू प्लीज टेल मी इन द लाइव चैट, what is the capital city of Egypt? Egypt की राजधानी क्या है? Okay, please tell me. So he was there and after that he came back to India. Now there's a question for you. First, capital of Egypt बताइए live chat में. The second is, which of the following award was received by Prime Minister Modi on a visit to Egypt? Your options are Champions of the Earth, Order of the Nile, Order of Druk Gyalpo, and Order of Zayed. Your time starts now. हाँ, very good. The capital of Egypt is Cairo. ठीक है, and also called as Kahira, ऐसे भी कहीं लिखा हुआ मिलेगा, Kahira. So actually it's a Arabic or Urdu version of Cairo. ठीक है, so it's written Cairo or somewhere maybe it might be written Kahira. So both are same thing.
ठीक है. Yes, very good. The PM Modi has got the award. And what is the name of that award? Many people are answering it. Order of the Nile. Yes, you can see this is the photo video, and this is President of Egypt, है ना, वो जो थे. So he is actually awarding PM Modi. This is pyramid. ये तो आपको पता होगा. Are you aware of the history of pyramid? ये वाला जो Sphinx है इसको कहते हैं, ठीक है. And this is Prime Minister with. This is actually the Egyptian Prime Minister along with PM Modi, ठीक है. So that you should be knowing it, ठीक है. I hope you are aware of this. Order of the Nile is actually the highest, you can say, award of Egypt. So like जैसे इंडिया में भारत रत्न होता है ना, so similar to that, this is actually Order of the Nile, the highest civilian award of Egypt, है ना, being awarded by Egyptian president. Okay, yes. Nile is the river of Egypt. Very good, Gauri. Can you please tell me which is the longest river of the world? हाँ, ये पिरामिड है गीजा का, हाँ, जो आप देख रहे हो, है ना. So longest river of the world कौन सा है, आपको ये बताना है. And the answer is actually, देखो यहाँ पर इजिप्ट जो रिवर जाती है यही है, नाइल रिवर लॉन्गेस्ट. ये व्हाइट नाइल और ब्लू नाइल से मिलके बनती है. सो इट एक्चुअली स्टार्ट्स फ्रॉम लेक विक्टोरिया, यहाँ पे है ना, लेक विक्टोरिया से व्हाइट नाइल स्टार्ट होती है. इट गोज लाइक दैट. And blue Nile starts from Ethiopian highland, meets like that, and this is Nile, river of Egypt. ठीक है. ये वाली white Nile कहलाती है, and this one is blue Nile. Okay. Both meets in the capital of Sudan called as Khartoum to make Nile river, which falls in Mediterranean Sea. ठीक है. तो यहीं पे कहीं पे आपको मिलेगा वो कायरो वगैरह, कायरो मिलेगा. ठीक है. It's a very famous historic city. यहाँ पे आपको एक जगह मिलेगा Alexandria, that's also very famous historic city. ठीक है. So you should be knowing it, है ना. तो Nile is the longest river of the world. ये आपको पता होना चाहिए. Okay. Before that, guys, as we all know, every Monday at 6 p.m. we having the quiz. So download our app, go to CLAT section. ठीक है. At 6 p.m. we'll be having this quiz where actually I'm revising the old current affairs of newspaper. जो revision करा रहे हैं, ठीक है, मार्च अप्रैल से, मार्च अप्रैल मई का. ओके, लाइक आई गिव यू क्वेश्चंस इन द हिंदू एनालिसिस. देखो मैं वो सारे क्वेश्चन देता हूँ जो कि आप पुराना वाला भूल गए होगे मार्च अप्रैल मई से. सो आई एम डूइंग द रिवीजन ऑफ दैट फ्रॉम मार्च अप्रैल एंड ऑल. ओके, सो डू ज्वाइन मी. क्या करना है, डाउनलोड द ऐप, गो टू क्लैट सेक्शन एंड एट 6 p.m. आई विल बी मीटिंग यू. लास्ट वाले यूट्यूब पे गया था येस्टरडे का, आई मीन लास्ट मंडे का, बिकॉज देयर वर सम टेक्निकल इश्यूज. नाउ इट विल बी गोइंग ऑन ऐप, सो नथिंग टू वरी. ठीक है, ऐप पर आ जाइएगा. Okay, the next one actually is, okay, CLAT 2024 comprehensive course, 300 plus recorded videos, 300 plus hours of live session, 35 plus mock test, monthly magazines are being provided. If you have any query, call on this number 95388 95678 पे call कर सकते हो. Okay, yes. Now we are providing a 3-day free trial, access CLAT with BYJU'S exam prep. So if you are want to see the free trial, the link is given in the description, from where you can register for that. Okay, so this is the editorial. Let's start with this one. Manipur, this is not a time for finger pointing. Okay, so this article is about the Manipur and all, so you should be knowing it. So इसको हम लोगों ने, we have discussed a lot about the two communities, the conflict and all, Kukis and Meiteis, है ना. So we have seen some unfortunate bloody clashes since May 3rd. That is what is being talked about. The author is saying we have lost almost around 120 lives and all. And another estimated 45,000 people got displaced in several temporary community run relief camps and all. So that is what you should be knowing it. Now he's going very much in detail about the history and talking about quoting some books and all. तो इतना detail अब आपको नहीं जाना है. Just have an idea about that. Okay. Now the current standoff in Manipur should have already shown how much the hills and valleys depend on each other for their mutual welfare. Yes, of course, people, whenever a people is living in a one state, of course, people depend on each other, है ना. So that is what is being talked about here in detail. इसमें बहुत detail नहीं जाना. Like he's talking about Bengal East Frontier Regulation, जिसमें एक concept होता है inner line permit का, where even in Indian, if wants to go in the inner line permit area, you need permission. So that was actually under Bengal East Frontier Regulation of 1873. This we should be knowing it. Okay. Then the pain of those forced to flee in the wake of present crisis is heart-wrenching and all. So he is saying, yeah, of course, the pain of those people who have witnessed the crisis and all is quite painful. We have seen the,
those running they had to leave their homes and all. So that is what he is talking about. ठीक है, अब इसमें इतना डिटेल नहीं जाना. इज टॉकिंग अबाउट चूराचंदपुर डिस्ट्रिक्ट. ये मैंने बताया भी था, मणिपुर में एक जगह है, तो सदर्न मणिपुर, दिस इज मणिपुर, यहाँ पर है. दिस इज एक्चुअली द वायलेंस अफेक्टेड रीजन, चूराचंदपुर डिस्ट्रिक्ट. Okay, that is what you should be knowing it. Okay, yes. In this, the shining example of Mahatma Gandhi's courage in calling of non-cooperation movement on February 1922 after violent Chauri Chaura incident is there to emulate and all. Okay, now isme he is quoting actually the non-cooperation movement and all. That in non-cooperation movement started from 1920 to 22. So in 1922 it got stopped because of Chauri Chaura incident. When violence happened, Gandhiji decided to stop it. Why? Because he's quoting that Gandhiji was he used to favor non-violence. So whenever violence used to happen, he used to stop the movement. ये एक मेन चीज था कि जैसे ही violence होता था वो stop कर देते थे movement को. So that is what is being quoted here. Okay, let's move on to another article. Outreach to diaspora and statesmanship. देखो diaspora का मतलब क्या होता है? Indians living abroad, है ना, तो उसको कहेंगे हम Indian diaspora. Okay, that's called as Indian diaspora. Okay, so now for example, let's say if an Indian is living in Japan, so a person is living in Japan, he's from India, so we'll call it as Indian diaspora. So that is what is being talked about. So he is talking among the Indian diaspora, Tamils constitute a substantial number. Okay, they form overwhelming majority in Malaysia, Singapore, Sri Lanka, South Africa, Reunion Island, Fiji and all. तो बता रहे कि जो Tamils हैं, Tamil diaspora is actually in Myanmar, so Thailand, Malaysia, Indonesia, यहाँ पे Fiji एक जगह वहाँ, then South Africa and different places. People from Tamil Nadu have gone to different places from India, है ना. तो Tamil diaspora की वो बात कर रहे हैं. Okay, so they have three identities: Tamil identity, Indian identity, and the identity of country in which they have settled. तो बता रहे कि जैसे कोई तमिल मान लो, let's say he has got settled in Malaysia, so he has an identity of Tamil, Indian identity, and the identity of the country in which that person is. ठीक है, so उसकी वो बात कर रहे हैं. ठीक है, that is what is being talked about. Then he's saying, the author is saying, they have the Tamil diaspora have excelled well in politics, economics, literature, fine arts, sports, science, etc. and all. ठीक है, so Tamil diaspora ने बहुत अच्छा काम किया है politics में, economics में and all. Like for example, he is quoting है ना, Muralitharan. He is actually also Tamil, living in Sri Lanka. Then Indra Nooyi also is there, the PepsiCo chairman once. Sundar Pichai, the Google CEO, is also from Tamil Nadu. Raghuram Rajan, the ex-governor of RBI. And Kamala Harris, vice president of USA. So these are actually the person from Tamil diaspora who have excelled in their fields. Okay, so Mr. Stalin's approach is a reminder of two statements made by Jawaharlal Nehru in Malaysia, 1946 March in Malaya in March 1946. When India became free, her hands will be long and powerful to protect each other and all. तो अब इसमें जा रहे हैं, he is going about the speeches and all, he is quoting that. ठीक है. Then एक चीज और बता रहे, Burmese government never granted citizenship to thousands of Indian Tamils. Okay, हाँ, ये एक issue था कि a lot of Tamils had gone to Myanmar in the past. I mean during British time. ठीक है. Myanmar is also called as Burma. ठीक है. And in 1962 there was a general of Myanmar called as General Ne Win, and he seized the power. A large scale expulsion of Tamils happened during his time. So he actually expelled it. Ki nikalo Tamils ko, means he ordered that Tamils should be expelled. Removed from this country and all. So that is what is being talked about here. Never granted citizenship to Indian Tamils and expelled them. वही 1962 का incident बता रहे. Okay, so that is what he is talking about. Okay. Now, so New Delhi adopted policy of give and take and converted Indian Tamil community into merchandise to be divided and all. अब इसमें इतना detail नहीं जाना है. So that is what is being talked about. But then he's saying about Citizenship Amendment Act. इसमें people are actually persecuted. People from actually Afghanistan, Pakistan were mentioned, but Sri Lanka was not mentioned. So he's talking ki does not include Sri Lanka. Because a lot of Tamils, there have been allegations that Tamils in Sri Lanka also felt persecuted and all and all. So that is what is being talked about here. ठीक है. Okay. Side में एक article है, Drug Controller General of India cleared emergency use authorization of new mRNA vaccine. And what is that called? Gemco Vac OM. ठीक है.
Now the question is, who has made this vaccine? First answer this. Your options are Serum Institute of India, Pune, Bharat Biotech, Hyderabad, Genova Pharmaceuticals. None of the above. Your time starts now. किसने किया बताओ? Anyone? Yes. The right answer is Bharat Biotech, sorry, not Bharat Biotech, sorry. Option C, Genova Biopharmaceuticals. C is the right answer to this question, है ना? It's from Pune. आपको पता होना चाहिए, है ना? देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी actually. Genova Biopharmaceuticals mRNA vaccine, and especially for Omicron variant it is. ठीक है? So that you should be knowing it. ठीक है? So C is the right answer to this question. Yes. Gauri, Sani Ansari, Sunshine, Garima Chaudhary, Ram Sheikh, you all are right. Okay. The next is India-US deal for 31 MQ-9B drones. When recently PM Modi visited, I hope you are aware, PM Modi visited USA, and ये drone का agreement sign हुआ था. MQ-9B Sky Guardian drone, है ना? So you can see it here that US President Joe Biden and PM Modi welcomed India's plan to procure this MQ-9B Sky Guardian drone. अच्छा, आप ड्रोन समझते हो ना? इसको एक और चीज कहते हैं, वी कॉल इट एज यूएवी, अनमैन्ड एरियल व्हीकल. देखो यूएवी एंड ड्रोन आर सेम थिंग. ठीक है? अनमैन्ड एरियल व्हीकल, एरियल व्हीकल. सो ड्रोन किसको कहते हैं? सो ड्रोन आर दोस एक्चुअली मीन एरियल व्हीकल व्हिच डज नॉट रिक्वायर एनी ह्यूमन. जैसे एरोप्लेन में क्या होता है, आदमी बैठता है ना, द पायलट इज देयर. But in drone, it is actually manless, humanless. इसके अंदर आदमी नहीं बैठता है. So that is the unique thing or about drones. Okay. Giving more details on the nature of purchase, the joint statement said that the MQ-9B, which will be assembled in India and all, that is what is being talked about. ठीक है? इंडिया में assemble होगा and all. अच्छा, पहले एक क्वेश्चन का आंसर बताओ. This MQ-9B drone is developed by which company or manufactured by which company? Lockheed Martin, Dassault Aviation, General Atomics Aeronautical System, Airbus. Your time starts now. बताइए, MQ-9B ड्रोन जो है, सब कोई लाइक बटन प्रेस करते जाओ गाइस. एटलीस्ट 30+ लाइक्स ले जाओ एवरीवन. बेसिंग ओनली 9 लाइक्स, सो 30+ लाइक्स ले जाओ. MQ-9B ड्रोन इज डेवलप्ड बाय होम? Okay, the right answer is actually General Atomics Aeronautical System. C is the right answer to this question. देखो यहाँ पर मैंने डिस्कस भी किया था जनरल एटॉमिक्स एरोनॉटिकल सिस्टम. इनफैक्ट देखो, अगर आप यहाँ देखोगे, यहाँ पे लिखा हुआ भी जनरल एटॉमिक्स ने बनवाया. ठीक है? यस. सो दैट इज व्हाट इज बीइंग. यस, 3. चंद्रेश, प्रिया, चवन, गौरी, यू ऑल आर राइट. सी इज द राइट आंसर. डसॉल्ट एविएशन तो राफेल जेट्स बनाती है ना, राफेल जेट्स, और ये फ्रांस की कंपनी है. एंड वी आर टॉकिंग अबाउट यूएसए, है ना? रिसेंटली पीएम मोदी विजिटेड यूएसए, है ना? तो ये यूएस की है ना? यू शुड बी नोइंग इट. Then Titan tragedy. How did Titanic tourist submersible operate? अच्छा, आपको ये पता है? I hope you are aware of this. Ocean Gate, ये आपको पता है? This happened and all. This was actually went to the Atlantic Ocean to find out the wreckage of Titanic. Titanic के wreckage को find out करने गया था. But they actually themselves met with an accident. Perhaps they got burst and all. शायद आपको पता होगा, ये फट गया and people died. इसके अंदर बहुत सारे billionaires, rich people were sitting. Billionaires were sitting inside it. I think 1 or 2 was from Pakistan as well and from other places. So yes, हाँ, 5 billionaires died. Yes, it was a serious thing. देखो, let me show in the map. Here is India. देखो UK यहाँ है, ये USA. ठीक है? Okay, let me show you. This is Atlantic Ocean. तो I hope you are aware. Titanic जो है ना, I hope you are aware. It's a very famous Titanic ship started from UK and it was supposed to go to US, New York. तो यहाँ पर कहीं पे, before reaching the US coast, यहाँ पर कहीं पे Titanic met with an accident. Okay, तो उसका जो wreckage है, wreckage यानी जो remain part है, वो अभी बचा हुआ है. So यही है wreckage. देखो ये Titanic का wreckage है, wreckage of Titanic. Okay, ये जो पोर्शन बचा हुआ है, ये यहाँ आप देख सकते हो. These are some of the images जिसमें टाइटैनिक का रेकेज बचा हुआ है. सो दे हैड गॉन इनसाइड इट. इसी के अंदर लोग गए थे कि फाइंड आउट करने. दे वांटेड टू सी एंड ऑल, बट अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि ब्लास्ट कर गया. अब उसका रीजन परहैप्स ये होगा. देखो क्या होता है, व्हेन यू गो डीप इनसाइड द वाटर, द प्रेशर ऑफ वाटर इज वेरी हाई. पानी का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है ना. अगर पानी के अंदर जाएंगे जितना ज्यादा नीचे,
So perhaps because of that pressure, ये जो है शायद उसको संभाल नहीं पाया, the pressure, this could not, I mean the ocean gate could not bear it and it got burst and all. So that is what has happened. Okay, so in which year Titanic accident happened? Since Titanic is in the news, you should be knowing it. Your options are 1936, 1912, 1971, 1987. सबको like button press करते जाओ and subscribe to our channel. Please press the like button, subscribe to our channel as well. CEO of Ocean Gate also died. There. Yes, 1912 में इंसिडेंट हुआ था. तो चूंकि टाइटैनिक न्यूज में है ना, तो टाइटैनिक से रिलेटेड साउथहैम्पटन से ये स्टार्ट हुए थे. साउथहैम्पटन इज अ प्लेस इन इंग्लैंड, है ना. From here in 1912 it started and it met with an unfortunate accident. मैंने बताया ना, यहाँ से शुरू हुआ था. And before reaching it somewhere here, यहीं पे कहीं पे on the western portion of Atlantic Ocean, the Titanic had met with an accident in the year 1912. तो ये आपको पता होना चाहिए. Yes, option 2, गरिमा, गौरी, इराम शेख, प्रिया चवन, आदित्य, you all are right. B is the right answer with you. Okay, the next is pricing terms of MQ-9B drone deal with US yet to be finalized. अभी मैंने बताया General Atomics बना रही है. This is manufactured by General Atomics. Okay, says government, है ना. So ये अभी will be finalized. अभी मतलब finalized नहीं हुआ है. Yet to be finalized मतलब has not been finalized. Has not been finalized. यानी क्या रेट पर खरीदा जाएगा, मतलब प्राइसिंग और टर्म्स मतलब होता है अग्रीमेंट्स के सारे टर्म्स होते हैं ना कि सो देयर आर सम अग्रीमेंट्स. सो व्हेन अ कंट्री बाइज, जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से यूएस इज सेलिंग इट टू इंडिया, तो कुछ अग्रीमेंट साइन होता है कि आप इसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन किसी और को नहीं शेयर कीजिएगा, लाइक दैट. सो दीज आर सम टर्म्स ऑफ कंडीशन दैट इफ यू आर बाइंग दिस फ्रॉम मी, whenever you require, let's say for example, I'm giving an example. So if you require repairing, you have to give it to me. Okay, do not leak any information regarding it to any other country. So these are some of the terms and conditions. तो अभी उसकी बात नहीं हुई है, फाइनलाइज नहीं हुई है. और प्राइसिंग की बात नहीं हुई है. प्राइसिंग मतलब होता है कि कितना में खरीदा जाएगा, मतलब अभी द डील हैज नॉट फाइनलाइज्ड एज फार एज प्राइसिंग इज कंसर्न कि इंडिया इज बाइंग एट विच कॉस्ट. ठीक है, तो लेट्स वेट फॉर दैट. तो वही कह रहा है कि अभी स्पेकुलेटिव रिपोर्ट सोशल मीडिया पे उस सब पे नहीं जाना है. अभी लेट्स वेट फॉर दैट when the final deal will be done or the final announcement will be done. Okay, हाँ, ये जो आइसबर्ग से टकरा गया था, someone is writing. It is said कि जब टाइटैनिक यहाँ से चला था, so there was some iceberg, it hit the iceberg and it met with an accident and all. Yes, Manu Punia, you were right. Okay, yes. Okay, so goods train overshoot signal hits a maintenance train and derails in Bengal. So I hope you are aware of this. देखो एक्चुअली ओवरशूट्स का मतलब क्या होता है. ओवरशूट्स मींस क्रॉसेस द रेड लाइन, क्रॉसेस द सिग्नल. ओके, मतलब जैसे ये सिग्नल है, ये रेड सिग्नल है, तो ड्राइवर को यहाँ पे रोक देना चाहिए ना. सो ड्राइवर इज सपोज टू स्टॉप द ट्रेन बिफोर द रेड सिग्नल, है ना. जस्ट थोड़ा सा पहले रोक देना होता है. ओवरशूट का मतलब है सिग्नल क्रॉस कर गया. सो दैट इज कॉल्ड एज ओवरशूट, मींस सिग्नल क्रॉसिंग. ओके. Okay, so this is saying goods train overshoots the signal, यानी जो ड्राइवर था उसने सिग्नल क्रॉस कर दिया, मतलब कि रेड सिग्नल होगा, it crossed it, hits a maintenance train and derails in Bengal. तो एक किसी और ट्रेन को जिसमें मेंटेनेंस का काम चल रहा था उस पर हिट कर दिया and all. So that was in the news in Bankura district of West Bengal. District West Bengal. तो इसमें शायद डेथ्स उसका कुछ तो आ नहीं रहा अभी कि कोई डेथ्स हुए, देख लेना. So loco pilot, assistant loco pilot and chief loco 2 chief loco inspector have been suspended in this regard. तो loco pilot का मतलब होता है, loco pilot मतलब locomotive pilot. Locomotive मतलब रेलवे इंजन. Locomotive मतलब रेलवे इंजन को हम लोग locomotive कहते हैं. Loco pilot means the one who drives the engine, है ना, रेलवे इंजन. That's called as loco pilot. ठीक है. Vikram Pragyan to return for another tryst with the moon. That is what we should be discussing. देखो एक्चुअली क्या है, Chandrayaan 3 mission will be launched very soon. Chandrayaan 3 mission will be launched. Okay, so that is what is being talked about. कि very soon, hopefully, देखो उसमें डेट लिखा होगा कुछ, will be India's third exploration mission is slated to mid-July. अच्छा, मतलब next month, July में most likely we'll be seeing the Chandrayaan 3 mission. And this will be containing again the Vikram, which is the lander, and rover as Pragyan. ठीक है, तो ये लैंडर है, इसका नाम रहेगा विक्रम. तो लैंडर का काम क्या, तो सिर्फ लैंड कर जाना मून पर and do the research.
रोवर में व्हील्स लगे होते हैं, रोवर इज हैविंग व्हील्स, इट कैन मूव, ठीक है, सो इट कैन मूव ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, ओके, सो दैट इज व्हाट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट। तो इसमें बता ये रहे कि नेक्स्ट मंथ विल बी हैविंग चंद्रयान 3 मिशन, ओके, वेयर विक्रम लैंडर एंड वराग्यान रोवर विल बी सेंट। यही दोनों नाम का सेम नेम लैंडर एंड रोवर वाज सेंट इन चंद्रयान 2 आल्सो। तो चंद्रयान 2 पे ही भेजा गया था, बट अनफॉर्चुनेटली ये वाला लैंडर उतना सक्सेसफुल नहीं हो सका अनफॉर्चुनेटली। सो वी होप दैट चंद्रयान 3 विल बी सक्सेसफुल। अच्छा बताइए, तो इसरो के चेयरमैन का नाम क्या है? हु इज द चेयरमैन ऑफ इसरो? एनीवन? यस, सबको लाइक बटन प्रेस करते जाना, एवरीवन प्लीज प्रेस द लाइक बटन। हाँ, यस यस, वेरी गुड, एस मिस्टर एस सोमनाथ, हियर इट इज रिटन, देखो यहाँ लिखा हुआ भी, कहाँ चला गया, हाँ एस सोमनाथ, ठीक है, ओके, यस। नाउ विक्रम जो है ना, विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया, विक्रम साराभाई फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम उनको कहते हैं, है ना, फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। सो इन्हीं के नाम पर, इन हिज नेम एक्चुअली, फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम, ठीक है, ओके, सो इन्हीं के नाम पर रखा गया है लैंडर का नाम, ओके, यस, आई होप यू आर अवेयर। एस सोमनाथ, वेरी गुड, बहुत सारे लोगों ने आंसर किया है, यस, गौरी, सानिया अंसारी, मानूस, आदित्य, एरम, तंजीला, प्रिया, नितिका, चंद्रेश, एस सोमनाथ इज द चेयरमैन ऑफ इसरो। नाउ ये मैंने बता दिया, वर्ल्ड पेज में वैगनर चीफ टू मूव टू बेलारूस इन अ डील ब्रोकर्ड बाय लुकाशेंको, है ना, तो ये मैंने बताया कि बेलारूस जो है वो सपोर्टिव ऑफ रशिया है, सो वैगनर ग्रुप का रिवॉल्ट हुआ था, उसमें एक्चुअली बेलारूस जाएंगे मीटिंग करने एंड ऑल। So this is all about today's class, guys. Please download our app. आज 6 बजे मुलाकात होगी. Today at 6 p.m. we'll be meeting with revision of the Hindu newspaper. So the Hindu newspaper का revision होगा. We'll be discussing about that. ठीक है. उसमें क्या होगा कि जो भी हम लोग मार्च अप्रैल मई से जो जो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, the questions which we are asking in the Hindu newspaper, I am doing the revision of that. So that would be very very beneficial. Download our app. Go to CLAT section and at 6 p.m. I'll be meeting there. Okay. So thank you everyone. कोई पूछा LVM3 लिखा हुआ, ये क्या है? देखो GSLV Mark 3 ये लॉन्च व्हीकल का नाम होता है, ठीक है, ये जो है ना, ये दिस इज GSLV Mark 3 जियोसिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल Mark 3, इसी का नाम बदलकर LVM3 कर दिया गया, लॉन्च व्हीकल Mark 3। ओके, सो दिस इज नथिंग बट अ लॉन्च व्हीकल जिसको हम लोग अपने वी कॉल इट एज रॉकेट, सो टेक्निकली इट इज कॉल्ड एज लॉन्च व्हीकल, ठीक है। So LVM3 एक तरह का मॉडल आप समझ लो, इट्स अ मॉडल, इट्स वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल रॉकेट इन इंडिया, ठीक है, LVM3 उसको कहते हैं, ओके, यस। सो थैंक यू एवरीवन, आई विल बी मीटिंग यू एट 6 p.m. थैंक्स फॉर वाचिंग, हैव अ नाइस डे।